नहीं आ रहा है, क्लास आना पड़ेगा, क्लास नहीं आओगे because I cannot go first just for the completion. Completion तो एक एक स्लाइड को एक एक मिनट खत्म. Okay, we'll start with this. Okay, last class we have studied up to this scheduling algorithm. Okay, so we studied the latency. In the latency, the seek time plays an important role because of the transfer time and the what is the other one? What are the three times included in the disk latency? Seek time? No, don't see. देखोगे तो तुरंत बताओगे. Rotational time. You have to bring the disk head, then you rotate the disk head so that under the head your sector has to become, then you transfer it. And as per the transfer time and the rotational time, it is always fixed. It is a hardware base. And as per the seek time, it varies because the number of persons at a time make a request. In which order you have to execute that request, that makes a matter. Okay. So that's why we studied this different kind of disk scheduling algorithm. The next most important thing is, once you know that my disk has a data and I have to do it, but our important thing is that how can you store the data? Because unless until you store the data, what is the meaning of fetching the data? So for storing the data, the most important part is the free space management. Unless until you know that how many blocks are free, if a new file you are typing in the notepad, if the notepad you have typed a long text, if the long text is almost 1000 byte, then to store this 1000 byte in a disk, I need 2 blocks. Now the question comes, where these blocks are available? Because depending upon the free blocks available, there only I can keep it. So this particular disk management is maintaining the free space blocks, where these free space are available. This free space are available based on these two criteria. One is the bitmap, another one is the linked list. One by one will go. What this bitmap says, if you have 1000 blocks present inside your hard disk, then it will create a file which having 1000 bits. Are you getting my point? If you can say that this is my bitmap file, if you have a number of blocks are 1000, if here the number of blocks are n, and you know the logical block address for CPU is considered it is an array. If you have 192 blocks total present, it is represented from 0 to 191. Means I need 192 number of bits has to be present inside a file. And this bitmap file is meant for what are the blocks are currently free. So if you can consider 0th block, if this is my file, if it is written as it is 1 and it is 0, it is 0, then it is 1, then 0, 0, 0, 0. If you can consider 0 means filled up, 1 means free, means block number 0 gets free, block number 3 gets free. So in this way, you can identify which block is free. So if you can think about a big hard disk, the hard disk has a 4 GB. Let's calculate it a simple one. If it is a 4 GB hard disk, your block size being 512, how many bits are required for the bitmap? Quick. Sir, what is 512? I'm saying that if the hard disk size is 4 GB, block size is 512, then what is the bitmap file size for the free space management? Quick, no need to think more. 512 bytes एक ब्लॉक, तो 10241 KB के लिए कितना हो जाएगा? सिंपल ना, 4 GB कितना है? 2 to the power 32. आपका 512 कितना है? 2 पर 9. So 2 to the power 32 by 2 to the power 9 कितना हुआ? 23. 2 to the power 23. This is how much then? How much? 8 MB. 8 MB.
means your bitmap file size should be 8 MB. So in this 8 MB, each file, each block will be represented by a 1 bit sequentially. You can find it. Can anybody tell me what's the easy and what the difficulties in this case? सपोज आप होटल में गए होंगे, देखे होंगे ना, वो एक रूम चार्ट को ऐसे मेंटेन किया होगा सिक्वेंशियली 1 2 3 4 करके. ये रूम अगर ब्लॉक है 1 लिख देगा, ये रूम अगर अभी खाली है 0 लिख देगा, ऐसे पूरा है. Now if somebody will say that I want to now store a new file inside the block, is it easy? It is easy to searching wherever the one is present. I found that that block is currently free. I'll occupy that. Means if I have a new file, suppose आप type कर रहे हो, if I have a new file and a new file required 1000 byte, then 1000 byte means 2 blocks, then your file will be stored in the 0th block and the 3th block. But problem is what? If almost more than half of the blocks are currently filled up, finding the 3 blocks is difficult in this. भाई आप सोचिए यहाँ पर एक ब्लॉक खाली है and यहाँ पर एक ब्लॉक खाली है और सब 0 है. To where this one is present, searching in a file will be a difficult task or not? अगर बहुत कम जगह फिल हुआ है, बहुत जगह खाली हुआ है, इनिशियली आपको तुरंत मिल जाएगा. This is very easy. But if most of the places are filled up, then finding once in a particular file is a tedious task. Yes or no? That is one. And he is maintaining also extra file for that. If that file gets corrupted, there is another issue. Because that file has to be stored in the hard disk. If hard disk gets corrupted and that file gets corrupted, the whole information gets gone. Yes or no? There are 2 problems. That's why what they thought, why don't you maintain a linked list? So what, guess what should be the linked list? ना पढ़ के देखिए. What should be the linked list implementation? Guess. जो free होगा उसको map जो free होगा ना. Suppose these blocks are free. In every block there is a space for writing the next address. Yes. तो क्या यहाँ पर होगा? Suppose 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सोच लीजिए 11 ब्लॉक्स है. एंड यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है. यहाँ पर क्या लिखा होगा बोलिए? 4. 4 has to be written. And what it will be written here? 7. And what it has to be written here? Null. It is maintaining a linked list or not? Means all the 3 blocks are currently in a linked list. Can it be easier to find out the blocks here? Yes, because आपको 2 block चाहिए immediately, and the first block will be pointed by whom? Let's assume 3. 3b. 3b is a pointer which is pointing to the first block. Once you get the first block, next block is what? He remembers the next block. It is quick to identify. Difficulties क्या होगा? Finding it easy. Even if it is almost 90% filled up, still we can find it very quickly. Yes or no? 5 block के लिए 5 टाइम ही आपको मूवमेंट करेगा. क्या प्रॉब्लम हो सकता है बोलिए? यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. If one of the block gets corrupted, कभी होता है ना, आप जब फाइल को रीड करते हो, किसी किसी जगह पर कुछ गार्बेज जैसा आ जाता है, या कोई फाइल को प्ले करते हो, फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह से प्ले होगा सॉन्ग, मिडिल में कुछ स्क्रैच हो गया होगा तो अच्छा प्ले नहीं होगा, फिर बाद में प्ले होगा. इन द सेम मैनर, इफ दिस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक गेट्स करप्टेड बिकॉज ऑफ हार्ड डिस्क में तो एक तो मैकेनिकल प्रोसेस है ना. सपोज हेड ये टच हो के स्क्रैच हो के वो खराब हो जाएगा. देन व्हाट हैपेंस हियर? Even if there are many free blocks present here, if this is gets corrupted, the next free blocks will be corrupted. So everything has some advantage and disadvantage. But since it is easier to identify, you can prefer this one. Yes, sir. This kind of linked list format you can use. समझ में आ गया अभी? So now you understand that how you are maintaining a free block. अभी free block मिल गया आपको, अभी फाइल रखेंगे. So how the file has to be stored? In which way the file is going to be stored? फाइल रखेंगे मतलब क्या है? जब भी आप टाइप करके सेव मार रहे हो, कंट्रोल एस मार रहे हो, that file has to be stored in a block. वो कहाँ पर स्टोर वाला है? How he is finding the block? Those things. But before going to this, once a file gets stored, in which way you are going to access? Suppose a file has a store here, here, and here. Then what is the way to access it? For accessing are 2 styles. That is called as access method.
द एक्सेस मेथड दो तरीका का होता है, एक है हार्डवेयर एक्सेस स्टाइल, एक है सॉफ्टवेयर एक्सेस स्टाइल। हार्डवेयर एक्सेस स्टाइल क्या है? योर डिवाइस इज सपोर्टिंग दिस एक्सेस मेथोडोलॉजी और नॉट। व्हाट आर द टू एक्सेस मेथोडोलॉजी आई हैव रिटन? सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट। आप बोल पाओगे क्या है? टेप ड्राइव देखो, टेप ड्राइव पुराना जो जमाने का 600 मैक्सिमम होता है एक साइड पे, देखो ना, दर इज ऐसे रोटेट करके होता है ना, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर एक सर्कल होगा, ऐसे 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 होके होगा, एंड ये जाके यहाँ पर भी ऐसे ऐसे ऐसे, एंड हियर द हेड हैज टू बी टच एंड दिस हैज टू बी प्ले। यस, कैन यू टेल मी आई वांट टू गो टू द थर्ड सम, कैन यू इमीडिएटली मूव टू द थर्ड सम? नहीं, आपको फॉरवर्ड करके थर्ड सम को जाना पड़ेगा। मींस दिस टेप ड्राइव इफ यू कंसीडर एज अ हार्ड ड्राइव, प्रीवियसली आप देखोगे बड़ा बड़ा कंप्यूटर में जैसे टेप ड्राइव घुसाते हैं ना, लाइक दिस हार्ड डिस्क को भी, हार्ड डिस्क विल बी ए टेप ड्राइव, उसको आप डाल दोगे तो इट विल बी एक्टेड एज अ हार्ड डिस्क। Yes, now you tell me, if your tape drive will be considered as hard disk now, if you want to access a file, is it a sequential or direct access? Direct access मतलब क्या है? थर्ड फाइल को डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तो आप सीक्वेंशियली रोटेट कर करके वहां जाओगे and because we find out of it. Yes, means those hardware itself is a sequential. You cannot make it direct. CD drive देखिए, CD drive डायरेक्ट या सीक्वेंशियल? सर वो भी तो डायरेक्टिव हो सकते हैं। वो डायरेक्ट, क्योंकि Direct है। CD ड्राइव का जो शेप है ना, ट्रैक सेक्टर जैसा है। आप अगर देखोगे, वन CD ड्राइव हैज हाउ मेनी सरफेस? टू सरफेसेस। एक सरफेस देखोगे पूरा ऊपर होगा, एक सरफेस में कुछ लिखा होगा, बट छोटा छोटा CD ड्राइव मिलता है, CD डिस्क मिलता है, आप देखोगे दोनों तरफ आप डाटा रख पाओगे। आप जो डिस्क खरीदे तो एक साइड पे कंपनी नेम लिखा होता है, एक साइड पे सर्कल जैसा होता है, then that circle and these things is a track and sector. Can you tell me if it is a track and sector? एक फाइल को सर्च करूंगा क्या, if it is my tracks, सोच लीजिए, हाँ, here I am present, my next song will be present here. Do you want to move to each track sequentially और हेड को सीधा यहाँ से यहाँ मूव करूंगा? सीधा यहाँ से वहां, मतलब to search a file it is a direct access or sequential access? Direct access. So that's why he is saying that magnetic tapes, मतलब जो tape drive और जो record tapes, those are basically sequential access and these are CD drives are basically direct access. समझ पाए? It is with respect to what? Hardware. अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं है, आप हार्डवेयर ही नहीं सपोर्ट करता। अगर आपका टेप ड्राइव में आप बोलोगे कि मुझे डायरेक्ट एक्सेस हो जाए, हार्डवेयर ही सपोर्ट नहीं करता है, डायरेक्ट एक्सेस में कहां? बट थिंक अबाउट दिस, इन CD drive there may be a possibility of sequential access because if my software is not supporting a direct access, how can you do it? अगर एक सॉफ्टवेयर ऐसे बनाऊंगा, यहां से यहां मूव करने के लिए वो ढूंढेगा, 3 पे हूं, 2 कहां पर है, 2 पे हेड को लेगा, 2 पे हूं, 1 कहां पर है। If your software is maintained like this, even if my hardware supported, can you make achieve this? No. So that you are going to क्या? सर हाँ बोलिए। सर वो बिटमैप कहाँ स्टोर होता है? बिटमैप कहाँ स्टोर होता है? Oh, that is actually, उनका क्वेश्चन है बिटमैप कहाँ स्टोर होता है। If you can think about the Linux platform, in the Linux platforms 0th sector is used for what? पहला जो 0th block, फर्स्ट वो 0th block bootloader के लिए, bootloader, हाँ। Similarly, there is a super block, there is a inode block. In this super block, it is going to be stored that file. Yes, there are different. 0th sector समझ पाए ना? फास्ट ट्रैक का 0th में आपका बूट लोडर होता है नहीं, which will be stored in the 7C00. That after that there is a sector called as a super block. After that there is a inode block. Those things we are going to study later. And he is asking where it is stored. In some operating system it may be stored in super block, in some other doesn't matter. Okay. Now next comes how the file has to be stored. The file can be stored in these 4 possible ways. Store मतलब क्या? मतलब if a file needs 5 blocks, how these 5 blocks will be allocated? Yes, अगर मैं बोलता हूँ
यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स आ गए, आप कैसे बिठाओगे? इफ यू आर ए टीचर स्टैंडिंग हियर, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? पहले से 10 बैठे हैं, पहले से 10 बैठे हैं, आप क्या क्या करोगे? आप बोलोगे जो 20 आए हो पूरा सीधा बैठ जाओ, गुस्सा होके बोले सीधा बैठ। और क्या हो सकता है? और क्या हो जाए? आप बोलोगे नहीं यहाँ एक खाली है ना, तू बैठ, और वहां खाली है, नेक्स्ट बैठ जाओ, वहां एक खाली है, नेक्स्ट बैठ जाओ, ऐसे आप बोलोगे। सिमिलरली इफ यू नीड 5 blocks, the 5 blocks can be arranged in a different manner of block. Those arrangements are either contiguous or linked or index or multi-index. एक एक करके सबका देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप बोलोगे नाम पढ़ के। सो फर्स्ट समझ पाए व्हाई इट इज रिकॉर्ड। नाउ कम टू कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। ये तो देख लिए थोड़ा बहुत। You assume that this hard disk is a collection of block and each square is one block. समझ ले? And your operating system supports the contiguous allocation method for storing the file in the hard disk. Assume, yes? Then every file will be usually in the Unix or Windows nowadays stored in a directory. The directory in a Unix system will be considered as also a file. वो भी एक फाइल है। उस फाइल में क्या लिखा हो पहले देखते हैं। इन दिस फाइल बेसिकली यू कैन फाइंड दिस कॉलम्स। व्हाट इज माय फाइल नेम, व्हाट इज माय स्टार्ट ब्लॉक नंबर एंड व्हाट इज माय लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ओके, इन व्हिच केस इट इज इन अ कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। सपोज सोच लीजिए दिस प्लेसेस आर द फ्री एंड दीज आर एलोकेटेड। एक नया फाइल है, उसका नाम है a.txt। उसको चाहिए 3 ब्लॉक, आप कहां पर एलोकेट करोगे? इफ इट इज अ कॉन्टिग्यूअस वन, कहां पर? 8, You 9, can 10. allocate here also because 2, 3, 4 is free. Yes, can you allocate here? No. Why? Because contiguous allocation say that all the 3 blocks has to be present at the same area continuously. Then only convenient. समझ में आया? Then this information is sufficient to maintain a directory. देखिए, आपको अगर स्टार्टिंग वाला मिल गया एंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिल गया, कैन यू टेल दैट वेयर दिस ब्लॉक्स आर प्रेजेंट? बोल पाओगे कि नहीं? इफ इट इज स्टार्ट एट 0, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज 2, देन वेयर योर फाइल इज प्रेजेंट, दिस पर्टिकुलर काउंट फाइल 0 एंड 2 पे कि नहीं? समझ में आ गया? यस। सो लाइक दिस इट इज ट्रू। द कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक से दैट द कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। कैन यू टेल दैट एडवांटेज? लिखा गया है सिंपल, कुछ भी नहीं होगा, कोई क्वेश्चन पूछ लेगा एटलीस्ट आपका आंसर हो जाना है सिंपल। उसके बाद तो क्या और क्या तरीका है? ही सेइंग इट इज अ सीक टाइम इज लेस, बाद में पढ़ेंगे। इट इज सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस सपोर्ट करता है। कर पाएगा? हाँ। डायरेक्ट एक्सेस मतलब क्या? मतलब क्या? आप कभी फाइल प्रोग्राम सी का लिखे होंगे, लिखे f-open a.txt रीड मोड, फाइल स्टार f1, उसके बाद f1 का एक कैरेक्टर रीड किया, गेट सी f1, यू आर रीडिंग वन कैरेक्टर, देयर इज ए सीक कमांड वाज दैट fseek। fseek का काम क्या होता है? fseek 0,20 मतलब बिगिनिंग प्लेस से 20th कैरेक्टर को सीधा चले जाओ एंड यू स्टार्ट रीडिंग 20। इफ योर फाइल is stored in a contiguous allocation technique, can you directly move to the 20th? यस सर। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हो पाएगा। स्टार्टिंग प्लस 20 फिर भी समझ नहीं पाए, फिर भी समझ में। Assume that your block capacity only 5 characters. आपका फाइल साइज है 30 कैरेक्टर्स, कितना ब्लॉक ऑक्युपाई किया होगा? 6, 5, समझ पा रहे हो? एक एक ब्लॉक में कितना कैरेक्टर आ पाता है? 5। आपका फाइल साइज a.txt का साइज कितना है? 30 बाइट्स। सो कितना ऐसे ब्लॉक चाहिए? 6 ब्लॉक। दिस 6 ब्लॉक इन दिस काइंड ऑफ एलोकेशन हैज टू बी स्टोर कॉन्टिग्यूअस और नॉट? कंटिन्यूअसली स्टोर। यस। सपोज आप लिखे, ऐसे लिखे, फाइल स्टार f1 इज इक्वल टू f-open दिस, टाइम नहीं है, मैं तो नहीं तो पूरा देखा था उसको, a.txt r1, ठीक है ना? यस। देन यू रीड a get c f get c f1 कैरेक्टर
D इक्वल टू, सो D में पहला कैरेक्टर रीड करेगा, देन यू F6, शायद मैं भूल गया हूं, आप मैन्युअली देख पाओगे, 0,20, उसका काम क्या है कि वो 0 से 20 पोजीशन, 0 मतलब बिगिनिंग, एंड से जा पाओगे या करंट पोजीशन से भी जा पाओगे। यस, इफ यू आर राइटिंग 0, दिस, देन यू आर मूविंग टू द 20th कैरेक्टर। 20th कैरेक्टर किस ब्लॉक में होगा? क्विक, फोर्थ ब्लॉक में है कि नहीं? अगर फोर्थ ब्लॉक में होगा, टू आइडेंटिफाई द ब्लॉक नंबर, डू यू मूव सिक्वेंशियली और डायरेक्टली? डायरेक्टली। डायरेक्टली। क्यों? अगर आपका बिगिनिंग ब्लॉक नंबर है 5, मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5, 6, 7, 8, 8 में होगा कि नहीं? मीन्स इट इज डायरेक्ट एक्सेस, मीन्स योर कॉन्टिग्यूअस allocation is support the direct access. And what is the software hardware here? If your hard disk is a tape drive, even if your operating system follows contiguous allocation, can you make a direct access? Even if you know that my file, my 20th character present in the 8th block, but to move from the 5th block to 8th block, it has to be go sequentially or not? अभी समझ पाए क्या है हार्डवेयर डायरेक्ट एक्सेस एंड सॉफ्टवेयर डायरेक्ट एक्सेस? योर कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन फॉलोज द सॉफ्टवेयर डायरेक्ट एक्सेस, बट दैट हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ व्हाट? ए हार्ड डिस्क. Hard disk is a hardware. If my hard disk become a CD drive, then it is follow the direct access. If my hard disk become a tape drive, even if my software follows the direct access, it cannot be done. समझ में आ गया? So that is the advantage of direct access is supported. Yes. What is the disadvantage? ना देख के फ्रैगमेंटेशन ही होगा। फ्रैगमेंटेशन, कोई बोले कि फ्रैगमेंटेशन क्या है? यहाँ पर कितना मैक्सिमम है देखिए तो 4, यहाँ एक 4, यहाँ एक सॉरी यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3, इतना ब्लॉक खाली है। कोई बोले कि 7 ब्लॉक वाला एक फाइल आया, कैन यू स्टोर इट? You cannot. Yes. So which kind of fragmentation it is? External fragmentation, because minimum many chunks are there but not at a single place. One thing. Another interesting thing. Yes. आप बोलिएगा अभी. Suppose which file it is 14 वाला देख लीजिए, TR. This is a TR file. See, the TR file is stored from the 14. How many he has occupied? 3 blocks. Yes. It is there. Immediately उस फाइल को नोटपैड में ओपन किया and I copy paste some thousands or 2000 characters into it, and each is block है 500 की, क्या प्रॉब्लम होगा? समझ पाए? मैं एक फाइल को ओपन किया, TR फाइल को in the notepad, at the end or in the middle I add some new text either by typing or कहां से कॉपी करके वहां पेस्ट कर दिया, then your file size gets increased or not? How many extra block you need? For the 2000 characters I need 4 blocks. Where it is allocated? It is allocated in 14, 15, 16. For the 4 block, is there any 4 block currently available? Continuously it is not available. Then in this scenario what he has to do? He has to be copy all these 3 along with this 4 to a new area where 7 continuous blocks are. It is a tedious process or not? And the file size is 6 bytes. 6 bytes. Definitely, because in a block you cannot keep 2 files data at a time. 1 block will be copied. Okay, that's why internal fragmentation always there. How many internal fragmentation? How many? How many max? How many max? No, how many max? Total हार्ड डिस्क में कितना? हर एक फाइल में मैक्सिमम n-1 कैरेक्टर होने का चांसेस है कि नहीं? हर एक फाइल में, if there is a 10 files are present, if each file having 1 byte and your block size is 512, what is the total internal fragmentation? 511 into 10. What my point? So here that is a problem. So problem क्या आया? If you increase or decrease the size of the file, or specifically increase the size of the file, this
kind of allocation may not be managed very easily. So that's why it is written that changing the file size is better. Yes, क्या हुआ, एक साथ नहीं मिला. किस टाइप का प्रॉब्लम होता है कहां पर, आरए में. अगर आप सोचिए कि एक आरए यहाँ पर 5-6 स्टोर है, यहाँ पर 9-10 स्टोर है, एंड यहाँ पे एक खाली है, एंड यहाँ पे 2 जगह खाली है. इफ 3 साइज का आता है, देन व्हाट टू डू, यू हैव टू मूव दिस 9-10 हियर सो दैट 3 स्पेस खाली हो जाएगा कि नहीं. हाउ कैन यू अवॉइड दिस प्रॉब्लम? लिंक लिस्ट. व्हाट द लिंक लिस्ट विल से, instead of continuously store these things, why don't this will inform next block's address, this will inform next block's address, then it will be done or not? Means, can you tell me in linked list, before seeing the next page, what the directory has to be maintained? Sir, current, the starting and the next pointer. Starting, this is the head pointer. What is the last? Tail pointer. Head pointer, tail pointer suffice to this setup. So by this way, you can know where your first byte and where your next byte. So this is maintained by a linked allocation. If you can look into it, this is the file. This is the starting block. Starting block is the 9th block. Inside each block, there is one area which will be remember the next block's address. So what is written here? In 9th block, it is written 16. In 16th block, it is written 10. Sorry, 1. In 1th block, it is written 10. In 10th block, it is written 25. In 25, it is written -1. Means that is the last one. So by this way, yes. Sir, sequential होगा ना ये भी. क्या क्या हो सब आप बोलोगे, आप ही अभी बोलोगे क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है. यस, सो शुरू करते हैं. अंडरस्टूड कैसे फाइल स्टोर होगा. अभी बोल दिया एडवांटेज, लिखा तो गया है, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? इस हिसाब से लिंक लिस्ट है. अगर इसको 3 एक्स्ट्रा चाहिए था, इसका ए पॉइंटर रखा, इसका ए पॉइंटर रखा, इसका ए पॉइंटर रखा, बिकॉज इट इज अ पॉइंटर. wherever my block will be doesn't matter a lot. So there will be no external fragmentation. फाइल साइज इंक्रीज करेगा, कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस है नहीं. लिंक लिस्ट में चेंज कर देंगे. एक एक्स्ट्रा नोड मालक कर दीजिए, वहां डाल दीजिए, एंड दैट पॉइंटर हैज टू बी पॉइंटेड बाय लास्ट नोड. So tell next equal to new node. हो गया कि नहीं? प्रॉब्लम बोल दिए हैं वो कुछ. What is the difficulties? Sequential हो जाएगा ये, क्योंकि लिंक contiguous memory allocation. हाँ, can you make a direct access here? ना. पहला ब्लॉक में हो 20 को जाना चाहिए, जानते हो कि 20th block means it is my 4th block. Can you directly jump from the first block to the 4th block? नहीं. फर्स्ट ब्लॉक को पता है सेकंड ब्लॉक का एड्रेस, सेकंड ब्लॉक को पता है थर्ड का होता है फोर्थ. मींस इवन इफ योर डिस्क इज सपोर्टिंग डायरेक्ट एक्सेस, आई कैन नॉट. वो भी एक यूज करेगा ना, वो एक आता है. वो क्या आंसर बोलना है? वो बोल रहे हैं कि इफ in this linked list this block gets corrupted, then what happens? अब तो नहीं कर सकते. 3 हाँ वो आता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो है इंडेक्स में, that is coming. But in this case, that is the problem or not? वो जो बोले, if this is gets corrupted, then I could not able to get it. Means half of the data आपको मिला, half of the data मिला. Even if those files, those blocks are fully present. Suppose A corrupt हो गया, doesn't mean that these are corrupted. Means this is present or not. Even if still it is present, that yes, बोल पाओगे? आपको middle data अगर एक corrupt हो गया, if you want to maintain a recovery software, कैसे बनाओगे? डबल पॉइंटर. हाँ, डबल कोई बोल दे, वेरी नाइस. वो बोल रहे हैं कि एक लिंक लिस्ट है, एक कोई एक नोड करप्ट हो गया, लेकिन आपको पता है कि मुझे कुछ डाटा अगर मिल जाएगा तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मेरा है, कुछ पार्ट करप्ट हो गया, मतलब पीछे का पार्ट भी है, आगे का पार्ट भी है. सिंस आई कीप दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार्टिंग नोड, ऑल्सो कीपिंग अबाउट द एंडिंग नोड, इफ आई प्रिपेयर ए डबल लिंक लिस्ट इंस्टेड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, देन बन पाएगा कि नहीं? आगे से जाइए कितना तक है, पीछे व्हेन यू नो द टेल से बैक होके आप कुछ देर तक आ पाओगे कि नहीं?
So if you maintain a double linked list kind of things here, then even if some nodes gets corrupted, still you can able to. Yes, so file size यहाँ पर increase नहीं करेगा. But problem क्या हुआ? If one node gets corrupted, then whole file gets damaged. That is also a problem. And another case वो बोल दिए कि if some file, middle file gets corrupted, then I could not able to get the rest of the data. So to avoid these things, they go for an index application. Index में क्या रहेगा? Suppose अभी क्या था? एक हाथ ऐसे था. If this particular hand gets corrupted, I could not able to get it. लेकिन वो क्या बोले? एक ही information रखिए index page. Under index page, you write down where my other pages are present. Are you getting my point? आपका बुक में जैसे होता है, आप एक ही इंडेक्स पेज है. अंडर इंडेक्स पेज व्हाट इज रिटन? माय दिस x is present in y page, 10 number page. This z is present in 13 number page. Like this, if you can do it or not. Then वो है इंडेक्स allocation. Yes, ये सीख लिया ना. And extra space is needed for each block. ये तो नॉर्मल चीज है लिंक लिस्ट का जो है, क्योंकि एक्स्ट्रा एक एड्रेस रखते हो वो खराब है. If any block is corrupted, वो भी सीख लिए. हाँ, एक अच्छी तरह से पढ़ेगा. सीक टाइमलेस क्या है इसमें? वहां पर सीक टाइमलेस है. डायरेक्ट एक्सेस इसलिए नहीं तो वो ट्रैक पे होता था ना सीक टाइम से. हाँ, सीक टाइम क्यों यहाँ पर लेस है? कंटिग्यूअस इसलिए. कॉन्टिग्यूअस है बोल रहे हैं, कोई एक कॉन्टिग्यूअस है बोल रहे हैं, इसीलिए वो नॉन कॉन्टिग्यूअस. ये तो कॉन्टिग्यूअस सपोर्ट करता है. ए इसका कंटिग्यूअस एलोकेशन इसलिए. हाँ बोलिए आंसर बोल पाओ. वो तो मूवमेंट करेगा. यहां से यहां डायरेक्ट मैं जाऊंगा, आप जो बोले यहां से यहां ब्लॉक को जाऊंगा, बट स्टिल इट इज लेस. ना जाऊंगा फिर भी लेस है. सीक्वेंशियली सिलेंडर पढ़े थे. ट्रैक सिलेंडर का इंपोर्टेंस क्या है बोलिए तो? सिलेंडर का इंपोर्टेंस, योर ब्लॉक नंबर्स नंबरिंग फ्रॉम 0 1 2 3 आर सिलेंडर वाइज और ट्रैक वाइज. पूरा सिलेंडर में कितना है? 48 ऐसे पढ़े थे कि नहीं फर्स्ट एग्जांपल में? यस, मतलब इसका 0th ट्रैक, इसका 0th ट्रैक, इसका 0th ट्रैक, सबको कंबाइन करके एक सिलेंडर की नहीं. पहले क्या फील होता है? पूरा सबका 0th ट्रैक फील हो जाता है. If your block number are 0 1 2 3 4 and each track is keeping only 2 sectors, then आपको सिलेंडर को मूव करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या बोल रहा हूं? Each track has only 2 sectors and your file is stored in 0 1 2 3 4, then आपको हेड मूवमेंट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस, ट्रैक जितना भी हो. मेरा प्लैटर है 6 तो क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यहां 2 रहेगा, इसका नीचे 2, इसका नीचे 2, ऐसे नंबरिंग हुआ है. When your head is pointing, all the heads are pointing to the same track of the each surface or not? अगर हो रहा है, then what will happening here? Once you find a 0 and a 2 here, the next one will be present in the same one or not? Can your head is going to be moved for getting it? नहीं. Yes, but लिंक लिस्ट का बात सोच लीजिए. अगर एक 0 पे है और एक 13 पे होता, आपके हिसाब से 13 कहां पर होगा? नेक्स्ट सिलेंडर कहीं पर होगा. टू मूव द सिलेंडर आई हैव टू मूव द हेड, देन सीक टाइम वहां पर बढ़ जाएगा कि नहीं? So if it is a contiguous, then एक ही सिलेंडर में there is a possibility that the whole file gets present. But if it is a different cylinder, my head is going to be moved, which is happening in case of linked list. समझ में? That's why here the seek time is increasing because my blocks are present in different cylinder. But since it is my contiguous and as per the disk is concerned, the blocks are arranged with the cylinder wise rather than a platter wise. Since it is arranged in a cylinder wise, in the same cylinder,
all the files, all your blocks may be present. Okay, that is that. Next बोलिए, next क्या हुआ? Then index allocation. Index allocation वो जो जैसे बोले ये simple है. This is my index block. And what is your file? File is file one. दिखाई नहीं देता? ये मैं सुनने पर हाँ सही this is a index block. If this is my index block, what the index block has to keep? The index block will keep these data blocks. So for this particular file है, what is the index block number? 9. मतलब ये मेरा index page है. Index page में क्या पता चला कि 9th block is my index block. In this 9th block, can you tell me what is written? Written 11, 3, 1. मतलब ये जो file A है, his data is present in 11 and 3 and 1 in this order. In this order, it is getting present. Yes. Then what does it mean? What is the advantage? What is the disadvantage? समझ पाए या नहीं समझ पाए? फिर से बोल रहा हूँ. Redundant नहीं. What is saying? He is keeping only the index block number. From the index block number, data blocks are finding. मतलब इस index block में क्या लिखा होगा? कौन-कौन सा data block में उस file का data है? Yes. So if you know the 9th is my index block, the 9th को जाओगे read करोगे 12, 3, 1 आ गया, then you can get this data. एक एक करके पूछूंगा. यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है नहीं हो सकता है? हो जाएगा डायरेक्ट एक्सेस. होगा? हाँ. कैसे होगा? तो पहले फाइल और फिर उसका वो. अगर आप उनका क्वेश्चन के हिसाब से अगर मेरा 20th ब्लॉक को जाना चाहते हो, वो कौन सा लाइन पे होगा? 4th लाइन पे कि नहीं? मेरा इंडेक्स ब्लॉक का 4th लाइन पे जो लिखा होगा दैट ब्लॉक विल बी कीप माय डाटा. दैट इज एडवांटेज. मतलब डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है. सर डेटा करप्शन का डेंजर रहेगा. एक है क्या फाइल का सर, वो सिंगल फाइल का डेटा करप्शन, वो 9th वाला 9th और 24. नहीं. एक चीज और एक चीज बोलोगे उसके बाद आपका आंसर. हाँ. इफ दिस नोड विल बी करप्टेड, तब दिक्कत है. तब कुछ नहीं है कि नहीं? यस. इफ योर इंडेक्स ब्लॉक इज करप्टेड, क्या ऑब्वियसली if a man something will be gone away. But for this kind of file system, the recovery software will be very easy. क्यों बोल पाओगे? Recovery software, if provided your index block is not corrupt. अगर कोई डाटा ब्लॉक करप्ट हो गया, if थर्ड वाला डाटा ब्लॉक करप्ट हो गया, still you can able to access the 11 and 1 or not. अगर एक ही इंडेक्स ब्लॉक में लिखा है कि 11 then 3 and 2. yes. so 11 में कुछ डाटा है, 3 में भी कुछ डाटा है, 2 में भी कुछ डाटा है. सपोज ये वाला ब्लॉक करप्ट हो गया, स्टिल यू कैन एक्सट्रैक्ट द 11 and 2 में जो है डाटा एक्सट्रैक्ट कर पाओगे कि नहीं? yes. so the recovery will be easy here or not. but if index block gets corrupted, you cannot help out. समझ पाए? और एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बता दोगे. हाँ, लेट्स व्हाट इज द इंडेक्स ब्लॉक साइज? इट इज ए ब्लॉक साइज हमारा कितना है नॉर्मली? 512 बाइट्स. अगर सर निकल गया तो ईच ब्लॉक का एड्रेस है 16 बिट. 16 बिट्स इज माय ब्लॉक एड्रेस. यस. ईच ब्लॉक का एड्रेस मतलब क्या है? मतलब ये जो 0, 1, 2 लिखा गया है ना, उसको लिखने के लिए 16 बिट चाहिए. 2 बाइट्स. समझ पा रहे हो? उसको लिखने के लिए 16 बिट चाहिए. कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ अ फाइल? बताया नहीं हूं लेकिन पूछ रहा हूं. समझ पाए क्वेश्चन? एक ब्लॉक साइज है कितना? 512 बाइट्स. ईच ब्लॉक का जो एड्रेस है उसको लिखने के लिए कितना बिट चाहिए? 16 बिट चाहिए. देन व्हाट शुड बी माय मैक्सिमम फाइल साइज? होता है ना कभी कभी आप बोलोगे इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 GB से ज्यादा बड़ा फाइल क्रिएट नहीं कर पाओगे. कोई बोलता है ना. देन सिमिलरली इफ दिस इज दिस काइंड ऑफ सिस्टम, व्हाट शुड बी द कैपेसिटी? 256. yes.
32 MB कैसे कैसे ओके नो प्रॉब्लम सो अदर्स प्लीज लुक इनटू इट कितना है 512 एक एक ब्लॉक को लिखने के लिए कितना चाहिए 16 बिट 16 बिट मतलब कितना है 2 बाइट 2 बाइट्स 2 बाइट 2 मतलब 2 to the power 1 पूरा ये कितना है 512 मतलब 2 to the power 9 सो कितना इसे एड्रेस लिख पाओगे 2 to the power 8 2 to the power 8 258 yes मतलब this is pointing to how many data blocks 2 to the power 8 data blocks and each block data block का कैपेसिटी कितना है 2 to the power data block मतलब नॉर्मल ब्लॉक मतलब कितना है 2 to the power 9 अरे each ब्लॉक का साइज कितना है 2 to the power 9 ए कितना को पॉइंट आउट करता है 2 to the power 8 so 2 to the power 8 into 2 to the power 9 this is the file size समझ पाए या नहीं समझ पाए यस सपोज सोच लीजिए यहां पर एक इंडेक्स ब्लॉक है यस इंडेक्स ब्लॉक में आप 8 लाइन लिख पाओगे 8 कैरेक्टर लिख पाओगे यस एंड ईच डाटा ब्लॉक का एड्रेस है लिखने के लिए 2 कैरेक्टर चाहिए यस सो इसमें कितना ऐसे डाटा ब्लॉक का एड्रेस लिख पाओगे 4 अरे 2 चाहिए मतलब क्या है एक नंबर यहां लिखे एक नंबर यहां लिखे ऐसे 4 लिखे मतलब इट इज पॉइंटिंग टू 4 डाटा ब्लॉक्स की नहीं ऐसे नो तो टोटल फाइल कितना होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस मतलब 4 इंटू ईच डाटा ब्लॉक का साइज कितना है 8 कैरेक्टर्स 8 इंटू 4 32 सो फाइल का साइज मैक्सिमम 32 होगा कि नहीं इन द सेम मैनर इफ माय index block size will be 512 each block will be become 16 bit then कितना हुआ कितना ऐसा एड्रेस लिख पाओगे बोल दीजिए कितना ऐसा एड्रेस लिख पाओगे 2 to the power 8 अभी बोले थे 2 to the power 8 और कितना 2 to the power 8 ना 2 to the power 8 so if it is become 2 to the power 8 each one will be pointing to what one data block each data block का कैपेसिटी कितना है 512 सो कितना ऐसे डाटा ब्लॉक है 2 to the power 8 डाटा ब्लॉक मतलब 2 to the power 8 into 512 is the capacity of the maximum capacity of a file समझ में आ गया यस तो ये तो बहुत खराब चीज हो गया फाइल को बढ़ा नहीं पाएंगे हम तो आजकल 2 GB का फाइल कॉपी पेस्ट करते रहिए कभी बंद नहीं करने का भी मन नहीं करता then what to do बट इंडेक्स बहुत अच्छा है इंडेक्सिंग बहुत अच्छा है क्यों अच्छा है डायरेक्ट एक्सेस भी होता है सीक टाइम भी यहाँ पर फास्टर हो गया बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट एक्सेस रिकवरी भी हमारा इजी इससे मिल गया देन देयर इज नो इशू देन व्हाट टू डू सर इंडेक्सिंग के साथ लिंक को इंक्रीज करने कैसे इंक्रीज करेंगे मल्टी लेवल इंडेक्स कर दीजिए मींस यू कीप वन इंडेक्स प्राइमरी इंडेक्स अंडर दिस प्राइमरी इंडेक्स यू कीप द सेकेंडरी इंडेक्स under that secondary index you keep the actual data block वो अगर होगा हो पाएगा कि नहीं yes क्या वो मजा नहीं आया क्यों मजा नहीं आएगा मजा क्यों नहीं आएगा because how can you distinguish that in a index block which part will be the data which part will be this and one more thing as per the hard disk block is concerned you should not use a block for multiple purpose खाली भी हो जाए एक ही पार्ट रखो आप multiple things you should not keep it but as per your requirement you keep data separately inside the same block and also you keep some index block rather than he is doing like this what he is doing that is also one criteria but what this normal hard disks are maintaining they are maintaining a multi index yes अभी आप बोलोगे तुरंत अगर समझ पाए in this multi index just look into it this is my primary index वही क्वेश्चन पूछता हूं this is my primary index this primary index का कैपेसिटी कितना था 512 बाइट्स ये जो इसमें कितना ऐसे लाइन लिख पाएंगे 2 to 8 मतलब एक एड्रेस कितना होता है 16 बिट का 16 बिट का मतलब 2 बाइट्स का होता है 2 बाइट दिस लाइन इज पॉइंटिंग टू सेकेंडरी इंडेक्स
ये भी आपका डाटा ब्लॉक नहीं है. And this secondary index is keeping the address of whom? Data block. So these are my index block and this is my data block. Multi-level paging को सोचिए. How many page tables you are creating in the first level? One. He is keeping what? The second level page table, and second level page table may keep directly the frame address or not. Same thing we can maintain. And what is this indexing here? Two level indexing. As per this, it is a 2 level. As per this, it is a 3 level. If same information I am giving you, can you tell me what is the capacity of the file here? सर प्रीवियसली जितना कैलकुलेट कर किए थे वो इनटू 256. वो बोलेंगे प्रीवियस जितना कैलकुलेट किए थे वो इनटू 256. हाँ ठीक है, हाँ गलत क्योंकि ये नॉर्मल मेथड है, ये करवाओ है. सर पहले में 256 फिर सेकंड वाले में 256 into that, और yes, very nice. He is pointing to how many? 2 to the power 8. Yes. Each secondary index block is pointing to how many data blocks? 2 to the power 8. Some 2 to the power 8. Because यहाँ पे भी तो 16 बिट लिखा होगा. So ऐसे कितना होगा? 2 to the power 8. So यहाँ पर ऐसे कितना डाटा इंडेक्स ब्लॉक है? 2 to the power 8 number of secondary index block, and each index block pointing to how many? 2 to the power 8. So कितना से डाटा ब्लॉक आया? 2 to the power 8 into 2 to the power 8 डाटा ब्लॉक्स आया कि नहीं? And each डाटा ब्लॉक का कैपेसिटी कितना है? 512. So this into 512. This is my maximum size file. Yes. Now the next question आता है, सर ये अगर कर लेंगे तो मेरा वेस्टेज ज्यादा है. क्यों? सर प्रिंटेब बोल के एक लाइन का सी फाइल लिखता हूं, वो इतना खा लेगा. कितना खा लेगा? एटलीस्ट दिस एंड दिस को वो ले लेगा कि नहीं? he will take this one and पूरा नहीं लगा, and he will take this one and one. समझ पाए? नहीं समझ पाए? क्या क्या क्यों बोला? पहला प्राइमरी इंडेक्स रहेगा, प्राइमरी इंडेक्स पॉइंटिंग टू द सेकेंडरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स पॉइंटिंग टू द डाटा ब्लॉक. मेरा प्रिंटफ को लिखने के लिए कितना कैरेक्टर चाहिए? हार्डली 50, 100 कैरेक्टर 512 में स्टोर हो पाएगा कि नहीं? हो पाएगा. मतलब एक डाटा ब्लॉक जरूरी है. उस डाटा ब्लॉक का एड्रेस लिखने के लिए एक सेकेंडरी ब्लॉक सफिशिएंट है, वो भी है. एक सेकेंडरी ब्लॉक को लिखने के लिए एक प्राइमरी ब्लॉक सफिशिएंट है. सो कितना ब्लॉक चाहिए? 3 ब्लॉक्स. एक प्रोग्राम को लिखने के लिए 3 ब्लॉक. खा लिया कि नहीं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. आप बोलोगे सर वो कॉन्टिग्युअस वाला किसमें अच्छा था? एक ही ब्लॉक में जो रोको और रिमेम्बर करो. लेकिन एक ये हमारा ज्यादातर फाइल एक केबी का भी नहीं होता है. I will make this. Then what the Unix thought? Yes, what the Unix thought about this? He told every file has a structure. Yes, that is called as a inode structure. This is a structure. If you can go to XV6 and search for an inode structure, you can find this kind of structure. What this structure basically says, it keeps many information. What is the information? Name of the file, what time it has started, size of the file, who is the owner, who is the group owner, what is the access for this file. All such information initial part it is stored. क्या क्या यहाँ पर जो पिक्चर में कहीं से ले आए हूँ, आप अगर देखोगे, अब दिस इज कौन सा मोड पे आप ओपन कर पाओगे? रीड मोड या राइट मोड और एग्जीक्यूटिव मोड जो लिखते हैं ना 777, this is mode. Then I'll show you also how it is stored in your file also. That is also I'm going to tell you now. Yes. Then owner, who is the owner? एक ओनर X होता है, Y होता है. These are the owners. Then group, कौन सा group? This group members. Timestamp, what time it has created, what time it has last modified, those kind of information. Size of the block, each block कितना है, how many number of blocks it has occupied. Yes. Then what next comes? Then count. The count you don't know. After next class you can know what is the count. Along with this,
he is remembering 3-4 parts. Here he is maintaining 12 direct blocks, one single indirect, one double indirect, and one triple indirect. What does it mean? If your file size, this 12 direct blocks are directly pointing to the data blocks. And single indirect कैसे बनाता है? He is pointing to one index and that index is pointing to data blocks. And double index बोल देता है one data block, one index, then secondary index, and that is pointing to this. And triple obviously like this. If your file size is very less than 512, direct. what is it? You go to the direct block, only remember this first part. Don't even go for the second. Then he is misutilizing it. No. Yes. If file size 12 into 512 से ज्यादा हो गया, what I told? If your file size is greater than 12 into 512, then कहां पर आएगा? Single indirect को आ जाएगा. अगर single indirect and 12 blocks सब मिला के file size उससे भी ज्यादा है, double indirect, then triple indirect. That पूरा मिला के जितना आएगा, that should be the maximum file size. अगर ये कैलकुलेट करोगे बहुत बड़ा है, कितना आएगा बोल पाओगे? As per the previous example, कितना आएगा? 12 into 512. 512. Then this ये per 8 into 512. 12. This will be 2 to the power 16 into 16 into 512. 512. This triple will be 2 to the power 24 into 512. सबको मिला लीजिए, ऐड कर दीजिए, जितना आएगा that is the maximum file size. समझ में आया? Yes, in this way it is average. Yes, so now Sir. आप देखोगे अगर कैलकुलेट करोगे करीब करीब 4 GB, 5 GB और 10 GB का कैपेसिटी आ जाता है. Yes, if you can take a 10 GB फाइल को अगर रखोगे, ओपन करोगे, वो 15 मिनट के बाद ओपन होगा. आप बोर होगे, कभी क्रिएट ही नहीं करोगे. Yes, yes. Yes, somebody was telling Yes, something. sir. Now I'm going to. हाँ. सर जब फाइल सर सिंगल सर हाँ. यहाँ पर हाँ बोलिए. यस सर. हाँ, जब सर सिंगल इनडायरेक्ट मोड में सेव होता है, वहां पे सर डायरेक्ट ब्लॉक भी ऑक्युपाइड रहता है. हाँ, डायरेक्ट ब्लॉक को ऑक्युपाई करके यहाँ and that format can be changed, but usually it is first fill upping this, then this, then this. Okay, that way it is maintained. Okay, that way it is basically come. सर तो आइडेंटिफाई कैसे करेगा सर? मतलब आइडेंटिफाई क्यों करेगा बोलिए तो? ये ब्लॉक एड्रेस सब लिखा है ना, आप तुरंत मिल जाएगा कि कहां पर है. ये 12 प्लस यहाँ पर जो ब्लॉक होगा यहाँ. If something will be greater than 12 into 512, it is go to this part. If something is greater than this plus this, it go to this part for search. Got it? यस Okay. सर. And if you can look into it, there is a command. If you can just look into it for the sake of understanding, if there is a a.txt file, suppose there is a test, ls कर दीजिए. There is a file called a test.c. How this file gets stored? If you can go to 8.24 आ रहा GB. yes, if you can see it here, exactly the way I saw it is stored here. What is the inode number? Structure दिखाया इस फाइल का. Next class पूरा पढ़ेंगे. File name क्या है? कितना size है? How many blocks he has occupied? Each block का size कितना है? तो इधर regular file आपको पता नहीं है. What is the regular file? What is the time stamp? What is the group ID? All this information. So next class पढ़ेंगे कैसे करें. हाँ? Excuse me, sir. Yes, please. Sir, I am having doubt in some numericals. Can I share? अभी नहीं हो पाएगा. Okay. अभी क्योंकि क्लास है मेरा तुरंत. नेक्स्ट सेक्शन. हाँ. Okay. सर कब करेंगे सर? एक टाइम बोल देंगे. 5 बजे. आप उस दिन कॉल किए थे 4 बजे. हाँ एक्चुअली सर वो मेरा डाउट वो ठीक हो क्लियर हो गया नेट से. 2:30 बजे. 2:30 बजे ओके सर.
हाँ हाँ हाँ, क्या बोले? आज नहीं हो पाया, कल अटेंडेंस। सर आई एम एंडिंग द मीटिंग। हाँ सर हाँ सर इसमें तो फिर वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं कि हर एक फाइल को वो क्या बोलते हैं उसको इवनली वो फाइल रिसाइज कर सकते हैं हम लोग? इवनली रीसाइज कर सकते हैं, ऑब्वियसली नो। आज इट इज क्वाइट इंक्रीजिंग इट, देन ग्रेजुअली योर सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल होके चला जाएगा कि नहीं? हाँ सर, हाँ तो वो जो ब्लॉक जो डेटा ब्लॉक है वो कोई लिंक लिस्ट जैसा होगा हाँ हाँ मतलब? सर जो डेटा ब्लॉक है वो कुछ नॉन कंटिगुअस होगा ना, मतलब कहीं भी होगा वो? हाँ, कहीं बार, क्योंकि मेरा आई नोड वो रखता है ना, दैट ओके सर। रखता है, दैट्स व्हाई इट हाँ इज ओके यस सर। फाइन। आई एम एंडिंग नाउ।